सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरे यहाँ आने के लिए जो मदद की, जो सपोर्ट की, मैं आप सबका उस पर इंतहाई मशहूर हूँ। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, first of all, praise and peace be upon everyone. And the scholar, Mr. Tariq Jameel, is thanking everyone for making this successful, for him to come in here and meeting such beautiful people like you. दूसरा मुझे पता चला कि आपकी 150 साल तारीख पूरी हो रही है, मैं उस पर आप सबको, आपकी गवर्नमेंट को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। And second thing which I've heard that you have been completing almost the 150th birthday of Canada, especially on this occasion. I congratulate you in advance for this anniversary. तीसरा, जिस मुल्क की लोग अपनी हुकूमत से खुश हों, वो हुकूमत से अल्लाह भी खुश हो। And third thing he's saying that the people of the country who are happy from their government, the Almighty Lord is also happy from them. और मैंने यहाँ पूछा, देखा, लोग आपसे खुश हैं। I have asked many people, speaking to many colleagues of mine and spoke with them, they are very happy with the officials here. मैं सारी दुनिया फिरता हूँ, बहुत कम ये सुनने को मिलता है। I have been around the world throughout my whole life. Rarely I hear these sentences from people. लोग आपको दुआ देते हैं। People praise you and people may pray for you. तीन चीजें जिस नेशन में, जिस फर्द में होंगी, उन्हें हमेशा इज्जत मिलेगी। If there are three things in a nation or a community, they will always get success. इंसाफ, Number one, justice. सच्चाई, Number two, being truthful. दयानत। And number three, being trustworthy. ये तीन चीजें आपके मुआशरे में मौजूद हैं। And all these three things, all these qualities are in your nation. और जिसमें तीन क्वालिटीज होंगी, वो हमेशा जलील होंगी। And there are three qualities if the community and nation has, they will always go towards a downfall. एक जुल्म, Number one, unnecessarily torture. एक झूठ, Number two, lying. एक धोखा। And number three, deceiving someone. इन तीन चीजों से आपके मुआशरा माशाल्लाह साफ है। And your community and your country is clean from all these three things. आपकी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। Your courts are doing justice. आप लोग झूठ नहीं बोलते। Your people don't lie. आप लोग धोखा नहीं देते। Your people don't deceive each other. तो आपकी इज्जत की वजह टेक्नोलॉजी नहीं, ये क्वालिटीज हैं। The main reason of you being successful is not the technology, it's these qualities. ये दुनिया में अब तकरीबन है ही कोई नहीं। In this world, there is no one these days. इस्लाम भी इसी का सबक देता है। And Islam also teaches these things. हमारे नबी का फरमान है Our Prophet Muhammad, peace be upon him, has mentioned कि एक इंसान जो मर्जी गुनाह कर सकता है, a person, no matter how many sins he wants to commit, he can commit. लेकिन दो कभी ना करे। But two things he shouldn't do. एक झूठ कभी ना बोले, Number one, he should never lie. और एक किसी को धोखा ना। And number two, he should not deceive anyone. हमारे नबी से पूछा गया क्या मुस्लिम बुज़दिल हो सकता है? Somebody asked the Prophet, can a Muslim be a coward? तो आपने कहा हो सकता He said yes. Can a person be a coward? He said yes, a person can be a coward. है। फिर उसने पूछा बखील हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। Can a person be stingy? Yes. फिर उसने पूछा क्या झूठ बोल सकता है? तो आपने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल Then सकता। he asked, can a person lie? The Prophet replied, no, a believer can never lie. तो इंसान के लिए उसकी जाती क्वालिटी में सबसे बड़ी क्वालिटी सच्चाई है। The best thing for a human being to groom himself or herself is to be truthful and honest. और सबसे बड़ी बुराई झूठ है। And the worst thing for a person which will make him dishonor in front of the community, it is being untruthful. और अल्लाह सच्चे को पसंद करता है, झूठे को ना पसंद। And the Almighty One also loves the one who's always being truthful and doesn't like the one who lies. मैं आप सबको बहुत मुबारक देता हूँ। I congratulate everyone, every single one of you, आपकी नेशन में ये चीज़ें बहुत हैं। that your nation and your community has these good qualities. मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी को ये कहता हूँ कि ये अमन वाला मुल्क है, आप यहाँ अमन के साथ रहते हैं।
Whenever I come to this country, I tell my Muslim community that this country is a country of peace. You should also learn how to have peace and maintain peace. हम इस्लामिक कंट्रीज में रहते हैं लेकिन हम अमन में नहीं हैं। We live in Islamic countries, but we don't have peace. यहाँ किसी को डर नहीं कि उसके मकान पे कब्जा करेगा, कोई उसके घर पे कब्जा करेगा, कोई उसकी जमीन पे कब्जा करेगा। यहाँ किसी को डर नहीं कोई उस पे झूठा केस करेगा। यहाँ कोई डर नहीं किसी। Here, no one has fear that someone will take over your house, someone will take over your land, someone will take over your property. Nothing, no fear at all. In our country, so many things exist. कोई झूठा केस नहीं करेगा। Nobody puts unnecessarily case on you in the court. तो मैं अपनी कम्युनिटी से कहता हूँ कि आप भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सच्चाई के साथ चलें। And this is why I urge and I appeal my community that you support your government and be truthful and honest to your government. और अपनी गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दें। And you should pay all your taxes in full. मुझे पता चला कि यहाँ टैक्स चुराते हैं। Yes, because some people steal taxes, so make sure you pay all your taxes. मैं अपने मुल्क में ये नहीं कहता। He said, I don't mention these taxes in my country. क्योंकि मेरी कंट्री में गवर्नमेंट चोर है। In my country, people themselves don't pay taxes. तो यहाँ गवर्नमेंट टैक्स खर्च करती है अपनी राय पर। Here, the government spends the tax on their people and on their communities, on the nation. ये चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। This is why we should never cheat. तो दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अभी आपका मुल्क है, आप इसके साथ सिंसियर हो अगर आपके पास पासपोर्ट है कैनेडियन। And another thing is saying that this is your country, you're Canadian citizens, be sincere to your country and be loyal to your country. आप पीछे खर्च करने की बजाय यहाँ खर्च करें। Whatever you earn, instead of making investments back home, make investments in your own country to give it an economical boost. लोगों की खिदमत करें। Serve people for humanitarian causes. अगर आपके पास पेपर नहीं है तो जेली पेपर ना बनाएं, चले जाएं। If you're living illegal in the country, do not make fake documents. Leave the country. यहाँ की लड़कियों को चीट न करें पेपर बनाने के लिए। Do not cheat girls just for paperwork and marry them and just for the sake of the paperwork and becoming a legal citizen. क्योंकि ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है ना इंसानियत। Neither Islam gives permission nor humanity gives permission to do this. और आपस में मोहब्बत से रहें। And we should live with love amongst each other and unity. एक अपने नबी की हदीस आपको सुना। There's a narration of my prophet. हमारे नबी से पूछा गया मल इस्लाम। Somebody asked the prophet, what is Islam? आपने फरमाया तीबुल कलाम व इतरामुत ताम। मीठा बोलना और खाना खिलाना। He said the definition of Islam is when you talk sweet and you feed people. हमारे नबी ने फरमाया कि सारे इस्लाम को मैं खुलासा बताऊं। The prophet said, shouldn't I tell you the gist of entire Islam? आपने ऐसे ज़बान पकड़ी और फरमाया ज़बान को काबू में। So he took his fingers and holded his tongue, and he said, make sure you control your tongue. फिर उसने पूछा सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? And he asked, what is the highest level of Islam? आपने फरमाया किसी को तकलीफ ना पहुंचे। He said, never give harm to anyone. ना ज़बान से ना हाथ से। Nor from tongue, nor from your body. फिर उसने पूछा ईमान क्या है? Then he asked, what is faith? तो आपने फरमाया माफ करना। He said, faith is forgiving each other और सब्र करना। and having patience. फिर उसने पूछा आला दर्जे का ईमान क्या है? He asked, what is the extreme? इंसानों के साथ बतौर इंसान ये नहीं देखना कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। इंसानों के साथ अच्छा बिहेवियर ये आला दर्जे का ईमान। The best and the highest peak of extreme of faith is that we behave each other. We behave good with each other. Doesn't have to be on the basis of religion, in the basis of humanity. फिर आपने फरमाया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सुन्नत। And the Prophet said, the best and example of my life. और सबके लिए। This is for everyone. कि अपने दिल को सारी दुनिया के इंसानों से साफ रखो। That we should clean our hearts from everyone in this world. माफ करो। We should learn how to forgive. लोगों की खूबियां देखो, बुराइयां ना देखो। We should always look at the good qualities of the people, never look at the bad qualities of someone. ये इस्लाम का
एक खुलासा जो मैंने आपकी खिदमत में This is just a little gist of Islam which I have presented in front of you. तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे इज्जत दी मौका दिया Once again, I'm very thankful to you and honored that you have given me this respect and this honor. मैं आप सबको सलाम पेश करता And I send salam to every one of you. Thank you so much for those very wise words, Malala. I know that Salma and all colleagues here are deeply appreciative of you sharing your wisdom, and we can see just how profound your words and what meaning they have. And, it's a real, indeed, an honor. I see Yasmin, you just joined us. Yasmin, I just asked colleagues who are here to introduce themselves briefly. If you want to just introduce yourself. I'm Yasmin, the Tansy Member of Parliament for Don Valley East, and I've been running between committees. But I know that Yasmin was very excited to hear from you, and inshallah, this will not be your only visit to Canada. That you will be coming back, I hope, soon. This has been wonderful, and we've heard from so many who've heard your wise words, who've been so deeply moved. Now, I believe we have some time for questions. If He said one more thing I want to mention. absolutely. मैं टोरंटो से मॉन्ट्रियल आया हूँ बाय रोड He said I came by road from Toronto to Montreal. आपकी सड़क पाकिस्तान जैसी उसका छत He said, I've noticed one of on your roads are like Pakistan. Make sure you develop it. We're working on that. Yeah. We've got a plan for that. I just noticed that we've got Suk Dhaliwal. Suk Dhaliwal from Newton North Delta. Assalamu alaikum. Thank you for coming, Suk. So I do believe we have time for questions. Si vous avez des questions, maintenant c'est le temps de poser. Yes, at the back. Assalamu alaikum, and thank you very much. I don't have a question, Mr. Mark Holland, and all the MPs, but I think on behalf of the community of particularly Toronto, we are so much thankful to all of you, and particularly Mark and Salma, who have really helped to have our esteemed scholars to be here amongst us. And as he spoke out very eloquently, that is the message of Islam, and that is the message of the Muslims, and that's the message of the Canadians. And we are so happy that we are together, and collectively we can pull these values not only for Canada but around the world, and we Canadians can be the beacon for the humanity. And that's what I have to say. Thank you. Thank you, and I would just say in return, I'm honored to be the Parliamentary Secretary for Public Safety, and I know in working with Ralph in the department and with Salma, that it was for us critical that you get an opportunity to come and speak, because the values that you espouse are profoundly Canadian. And I think that, as I was listening to you speak and sharing your wisdom, the things you were speaking of would resonate with every Canadian from coast to coast to coast. So it's so important that this opportunity be granted, and I think it makes our country much richer. So it was absolutely our pleasure. Yeah, Frank. You had mentioned that we're gifted here in Canada to have peace, but that is not the case in a lot of Muslim countries. In Pakistan, what can Canada be doing to help? How can we be helping? He said the help you send, it will be eaten in the middle on the way. But is there He said just pray for us. but We request for your prayers. is there things our government should be doing to He said the love you're giving to our country, this is more than enough. The love and the respect which you give us, we are so thankful for that. Maulana Sahab,
हम में से जो लोग छोटे जिनके बच्चे हैं अभी और वो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे हम पेरेंट्स के लिए कि हम उन बच्चों को इस कंट्री में जो है वो किस तरह ग्रो अप करें थोड़ी सी नसीहत. Kindly translate your question as well in English. Sure, I can translate. So what advice, Maulana, would you give those of us who have young kids growing up in Canada and we want them to grow up as strong Muslims but also being loyal Canadians? Any advice around that? सच्चाई सिखाएं He said the one message: tell them to be honest and be truthful और क़यामत सिखाएं. and be trustworthy. जो बच्चा दो चीजें सीख जाएगा वो अच्छा इंसान भी बनेगा, अच्छा मुसलमान. Any child who learns two things, he will become a good human as a human, and if religion-wise, if he's a Muslim, he will become a good Muslim as well. मैं पहले I'll ask my question in Urdu and then I'll translate that in English. तो मुझे अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है यहाँ 2-2.5 साल में, इसलिए आपको देख के मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ. मैं अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पाई. मेरा सवाल ये है कि हम जब यहाँ होते हैं तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी जो हम ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जब वहाँ के हालात ख़राब होते हैं, हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं. हम ऐसा क्या करें? सैलाब आया और चीज़ें, तो हम यहाँ जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो जमा करते हैं और वहाँ पाकिस्तान, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है अपने उस मुल्क को भी याद रखना. लेकिन रूटीन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क की मदद कर सकें? क्या करें यहाँ बैठ के कि हम यहाँ भी मदद कर सकें और वहाँ भी मदद कर सकें? My question is that what should the Pakistani community in Canada do in order to help our people back home? That is, how can we help on a regular basis rather than just pitching in funds when there's a calamity or an atrocity? On a regular basis, what should Canadian Pakistani do? मुझे यहाँ के डीपली हालात मालूम नहीं है कि क्या शक्ल बन सकती है. आप यहाँ अपनी नेशन को, अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाएं, सच्चाई क़यामत सिखाएं. हमारे नाम के साथ सच्चाई लग जाए तो यही हमारी बहुत बड़ी हेल्प. He's mentioning that I'm not aware of the deep situation in this country currently, the current situation, but I said I will only give one message, which is my message that be honest, be trustful. These things will have an impact on your country and it will make you help other countries as well. Yes, please. Thank you, Mr. Salma, Dr. Mark, and welcome, Jan. I've been to Pakistan, and being born in a Sikh family, I was given a royal treatment. Basically, everywhere I went, from small village to big city, people just came together and love and respectfully shown me. It's amazing, and I always would love to go back. And when I come back to my riding of Surrey Newton, I have a big Muslim population, and there's a big diaspora from Pakistan. When I look at my riding, we live like brothers, sisters, and particularly all the babas, like the elderly fellows that came from Pakistan. They all came together for me. And when I look at around the world, and I don't see that kind of feelings. I would like to see how that, because the negativity flows, for example, London, England, they don't have that same bond that we have in Surrey, Newton, and across Canada. What can be done, on a larger scale so that negativity doesn't flow into our communities too. So in future we can live the way we are living in peace, harmony, and as brotherhood. पंजाबी में तर्जुमा कर दें. पंजाबी में तर्जुमा कर दें. So, सारा पहला तो सलमा जी दा ते मार्क मेरे दोस्त दा मैं धन्यवाद करना ते तानू मैं इत्थे जिया कहना ते पाकिस्तान दे विच मैनूं मौका मिलिया सीगा जाण दा ते जदों मैं उत्थे गया बड़ी सिटी तो लैके छोटे पिंड तक भी जिहड़ा सीगा जदों मैं बिना किसी सिक्योरिटी तो उत्थे जदों गया बड़े लोकां ने मैनूं प्यार सत्कार दित्ता ते मैं ऑलवेज मेरा दिल करदा रहिंदा कि मैं वापस फिर उत्थे जावां ते जिन्ना प्यार उत्थे मिलदा है. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ.
ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥੰਮ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नेगेटिविटी को फैलाने वाली सबसे बड़ी चीज ज़बान है। Is the tongue. इसका गलत इस्तेमाल होता है तो फिर नेगेटिव फैलता है, दिल फटते हैं, नफरत पैदा होती है। When it's used wrong, the tongue, of course, is going to spread negative. Is going to give a negative message, and people will have hatred between each other, and people will have disunity amongst each other. They will not love each other then. सिर्फ अगर आप अपनी कम्युनिटी में ज़बान के बोल को पॉजिटिव करते हैं तो आपकी मोहब्बतें बाकी रहेंगी। Only thing, if we promote positivity within the community, remember it will create more love amongst you. दो आदमी एक शख्स के बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे। Two people were talking behind someone's back in a negative way. हमारे नबी ने सुन लिया। The Prophet heard this. अब जा रहे थे आगे, गधा मरा पड़ा। So when he was going up ahead, he saw a dead donkey on the way. The Prophet. बदबू पैदा हो गई। It was getting decayed. आपने उन दोनों को बुला कर कहा इसे खाओ। He called those two people and he said, "Eat this donkey now." कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं? He said, तो जानवर नहीं खाता। He said, "What are you saying? Not even an animal will eat this." आपने फरमाया, अभी जो तुमने अपने भाई की बैक बाइटिंग की है, ये उससे वो इससे ज़्यादा। He said, "Just now you were backbiting behind someone's back. This is worse than this." तो माशरे को जोड़ने वाली चीज भी ज़बान है और तोड़ने वाली चीज भी ज़बान है। To connect the community and the nation, the only thing is the tongue, and to bring or create a war in the nation is also the tongue. इसलिए मैंने आपको अपने नबी की हदीस सुनाई कि आपने इसे ज़बान पकड़ के फरमाया कि इसको काबू में रखो, ये पूरे दीन की समरी है। This is why I read you the statements of my Prophet, that when he holded his tongue and he said, "Control your tongue and learn how to control your tongue, because this tongue can create positive message and it can give a negative message."